सब्सक्राइब करिए लर्न फॉर एग्जाम चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about the current affairs for 16 June. And I'm really sorry. I know यार मैंने current affairs नहीं डाले थे, ठीक है? But जिन्होंने मिस कर दिए, I can do one thing for you कि मैं उनकी बीच में वीडियोस डाल सकता हूँ अगर आप चाहते हो. If you want कि मैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सबके डाल दूँ तो मैं डाल दूँगा वीडियो बनाकर एक ही टाइम में, ठीक है? If you want to, because थोड़ा मैं अपने बिजनेस में बिजी था, ठीक है? सो दैट्स वाई मैं डाल नहीं पाया. आई एम रियली सॉरी, थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी उसमें, ठीक है? सो आई वाज सॉल्विंग दैट थिंग बट नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड. So let's start this video. This is about us. If you want to read, you can just pause the video. So let's start the daily current affairs. So the first is Tamil Nadu ban e-cigarette. So e-cigarette मतलब वही हुक्का जो होता है, बाकी मुझे पता नहीं, जो भी वेपर वाला होता है ना, ठीक है, उसका. So Tamil Nadu is planning to ban electronic cigarettes, battery operated inhalers, जो शायद वेप कहते हैं शायद, मतलब जो मैंने यूट्यूब एक दो बार देखा वही मतलब होता है जिसमें वो लोग पता नहीं क्या छल्ले छुल्ले बना रहे होते हैं, ठीक है. बैटरी ऑपरेटेड इनहेलर्स दैट एमिट डस्ट ऑफ वेपराइज्ड निकोटीन, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर विजय भास्कर टोल्ड द असेंबली. वैसे मैंने सुना है कि वो लोग कहते हैं कि वो मतलब हार्मफुल नहीं है, बट इट्स रियली हार्मफुल. अगर आप देखोगे तो पता रिसर्च करोगे तो देन यू विल गेट टू नो. An electronic cigarette or e-cigarette is hand-handled electronic device that stimulates the feeling of tobacco smoking. It works by heating a liquid to generate an aerosol, commonly called a vapor, that the user inhales. Next is Bellandu, largest septic tank of Bengaluru. अब बेंगलुरु के तो जैसे जाओगे ना, वहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ से उतरोगे तो मतलब किसी भी जगह जाना, अगर आप वाइट फील्ड जाना चाहते हो या फिर इंदिरा नगर जाना चाहते हो, ठीक है, तो क्योंकि वाइट फील्ड सारे जाते हैं अगर आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, या स्टार्टअप में जा रहे हो. सो वहाँ तक जाने के लिए आपको 2.5-3 घंटे लगते हैं. सो नॉर्मल सी बात है, ट्रैफिक और वहाँ पे इतने सारे वैसी मतलब छोटी छोटी सड़कें हैं. सो आपको देखेगी लेक्स, और वहाँ की लेक्स देखोगे तो ऐसा लगेगा लेक नहीं है, नाला है, ठीक है, बिकॉज हालत उनकी इतनी ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ द कंपनीज एंड ऑल दैट स्टफ, द वेस्ट जो हम डालते हैं. अ कमिटी अपॉइंटेड बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) हैज सेड that the Bellandur Lake in Bengaluru has become the largest septic tank of the city. The report states that the lake's water holding capacity has shrunk due to the dumping of garbage, construction waste, among other things. ठीक है, Agra and Vathar were the other water bodies inspected by the panel. Okay. Next is PhD must for directly recruiting teachers. So अगर आपको HRD डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, so please mark this thing और याद कर लेना, HRD मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर has announced PhD degree will be mandatory for direct recruitment for the post of assistant professors in central universities from 2021. However, master's degree with national eligibility test would continue to be the minimum criteria. The ministry has also decided to scrap the academic performance indicator system used to promote teachers. Telangana banned plastic items in offices. The Telangana government directed all urban local bodies and civic municipal bodies to ban usage of single-use plastic in the offices. Okay, and use of plastic, मैंने पहले ही बताया था कि तेलंगाना is doing really great, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस समय. So use of plastic below 50 microns of thickness is already banned as per the Solid Waste Management Rules 2016. The government plans to make Hyderabad a single-use plastic-free city by 2022, which is a great thing. Wholesale inflation hits 14th-month high. So India's inflation measured by the wholesale price index WPI rose to a 14-month high of a 4.43% in May as compared to the 3.18% in April, government data revealed. Vegetable prices grew up by 2.51% in May, and while primary articles that account for over 1/5 of the entire WPI grew by 3.16%. Fuel and power inflation grew at, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, आग लगी पड़ी है. व्हाट्सएप ओपन्स UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस, सबको पता ही है, उसमें हो जाता है 5,000 पर ही सबके लिए ओपन हो गया, ठीक है. फरवरी में उन्होंने कुछ को दिया था, अब सबको कर दिया. HDFC fifth biggest consumer FSC Forbes according to housing finance measure. Okay, HDFC has been ranked as the fifth biggest public company globally in the consumer financial services category. Okay, and on a list compiled by Forbes magazine, HDFC rank moved up from the 7th place last year. American Express has topped this category, while Indiabulls Housing Finance is the only other Indian company at the 13th place on the list. Next is Fitch
ups India growth forecast to 7.4%. Fitch Ratings raised India growth forecast for 2018 to 2019 to 7.4% from 7.3%, but cited higher financing costs and rising oil prices as risk to growth. For 2019-20, it estimated the country to grow at 7.5%. The economy grew at 6.7% in this financial year last, okay, 2017 to 2018, and that 7.7% in January March quarter, okay, जो अभी चल रहा है, मतलब जो पिछला आया निकला. नेक्स्ट इज ओमर अल रजाज, जो भी नाम है यार, क्या है, ओमर अल रजाज, Sworn in as the Jordan PM. Okay, so इसका नाम याद रखना, ओमर अल रजा. अब तो याद ही हो गया, okay? इतनी बारी मैंने फनी वे में बोल दिया, ठीक है, बहुत हो गया. Former World Bank economist Omar al-Razaz was sworn in as the Jordan's prime minister after King Abdullah issued a decree approving the new government. इसका मतलब लिखना नीचे, ठीक है. रियली सॉरी यार, क्या है ये, पीसी भी यूज़ नहीं होता मुझसे तो. The 58-year-old who studied at Harvard University was tasked with reviewing the country's disputed tax system over succeeded Hani al-Molki. क्या है ये, अच्छा, इससे पहले वाले का नाम ये था, कमाल का नाम है. Who resigned following mass protests over price hikes and the other government economic policies. देख लो, मतलब हमारे देश की नहीं, सारे देशों का यही हाल हो रहा है. जॉर्जियाज PM जॉर्जी किबिलोवाच कबाशविली, जो भी नाम है, रिजाइंस. वैसे इसका सही नाम है जॉर्जी क्वीरी काशविली, okay, Georgi Kviri Kashvili, Prime Minister of Georgia, has announced his resignation amid a disagreement with Bidzina Ivanishvili, ठीक है, Ivanishvili, the leader of the ruling party. Kviri Kashvili, 50, जो 50 साल का, has been the country's prime minister since 2015. The prime minister's resignation comes and growing popular discontent over his government's handling of the economy and the aftermath protest in recent months. इसका भी हाल ख़राब ही है देश का भी. नाबार्ड रिलीजेस बुक ऑन इंडियन क्रॉप्स. सो जो हमारे श्री नितिन गडकरी जी हैं, ठीक है, रिलीज्ड अ बुक वाटर प्रोडक्टिविटी मैपिंग ऑफ मेजर इंडिया क्रॉप्स पब्लिश्ड बाय नाबार्ड, ठीक है. द बुक, नाबार्ड की फुल फॉर्म बताना क्या होती है. द बुक इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ 10 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स. द 10 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स इंक्लूड राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन एंड पोटैटो एक्सेट्रा. द बुक सजेस्ट टू रीलाइन क्रॉपिंग पैटर्न कीपिंग इन व्यू water scarcity of irrigation. Okay, the new report on paid paternity leave. According to new UNICEF analysis, India is among the almost 90 countries in the world without national policies in place that ensure new father get adequate paid or time off with their newborn babies. मतलब हमारे यहाँ पे औरतों को लीव मिल जाती है बट आदमियों को नहीं मिलती. Almost 2/3 of the world's children under 1 year old, nearly 90 million, live in countries where their fathers are not entitled by law to a single day of paid paternity leave. Next is National Tribal Museum to be built. So a National Tribal Museum along with the National Level Tribal Research Institute is proposed to be set up at Delhi by the Ministry of Tribal Affairs. The Minister of Tribal Affairs, Shri Jewel Oram, said that the Muslim will showcase the rich tribal culture and heritage using state-of-the-art technologies. The proposal to be set up the museum and the TRI, okay, has already been sent to the Niti Aayog. New Incredible India website launched. So the Minister of State for Tourism, Shri K.J. Alphonse, launched the New Incredible India website. The website showcases India as a holistic destination revolving around major experiences such as spirituality, heritage, adventure, culture, yoga, wellness, and more, and corruption. The website follows trends and technologies of international standards with an aim to protect India as a must-visit destination. India to host European Union Film Festival. The European Union Festival will premiere in New Delhi on 18th June 2018. Okay, with a selection of 24 latest European films from 23 EU member states this year. The film festival will bring some unusual stories to the world of world cinema enthusiasts. European Union Film Festival is organized by Directorate of Film Festivals, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India and the EU. 20 states signed MOU for Ayushman Bharat. सो मैं लाइक MOU की फुल फॉर्म बताना क्या होती है मैंने बहुत बार एक्सप्लेन की हुई है. श्री JP Nada exchanged the MOU with the state health ministers of 20 states, marking their commitment towards the launch of Ayushman Bharat. It will be cashless and paperless access to services up to 5 lakhs per year, which will be available for the beneficiary families.
Ayushman Bharat is national health protection scheme which will cover over 10 crore poor and vulnerable families. Next is Swajal launched 115 aspirational districts. So Ministry for Drinking Water and Sanitation announced that Swajal Yojana will be launched in 115 aspirational districts of India. It will involve an outlay of 700 crores through flexi funds. Swajal is a community-owned drinking water program for sustained drinking water supply launched in 2018. Swajal pilot project was launched at village Bikampura, Karoli, Rajasthan. Indrajit Singh became Secretary Ministry of Coal. So Dr. Indrajit Singh assumed charge as Secretary Ministry of Coal at Shastri Bhavan Office, New Delhi. Dr. Jeet Singh took over the charge of Secretary, which will fell vacant after the superannuation of Shri Sushil Kumar on April 30th this year. Dr. Jeet Singh was posted as Secretary Coordination Neetu Vikas. Next is three solar power projects decided dedicated to nation. Okay, so the डॉक्टर पीयूष गोयल जो कि हमारे एक मिनिस्टर हैं, किस चीज़ के हैं ये यहाँ लिखा तो नहीं, या नहीं लिखा, आप बताओ नीचे. Inaugurated NLCIL's 300 megawatt solar power projects for commercial operation and dedicated these projects to the nation. The solar power projects are situated at Thopalarkarari and Sedhupuram, कोई जगह होगी, in Virudhunagar district and Salaiya जो भी है इन Trivulunelli district. क्या है ये, क्या इतने वर्ड क्या थी ये लाइन. The power produced from these 3 units will be given to Tangdingdogo at the cost of 4.4 per unit. क्या मतलब यहाँ के लोग कर क्या रहे हैं, कैसी इंग्लिश है इनकी. Next is PM Modi dedicated expanded Bhilai plant to nation. PM Modi inaugurated the integrated command and control center at Naya Raipur Smart City, Chhattisgarh. Prime Minister dedicated the modernized and expanded Bhilai Street plant to the nation. He laid the foundation stone for IIT Bhilai. He also unveiled a plaque to unmark the commencement of phase 2 of BharatNet. The Prime Minister inaugurated air services between Jagdalpur and Raipur. So this completes this session. Thanks for watching, and you can enroll in our courses NMAT Snap, CAT NMAT Snap, and the MBA 1-year program and the MBA 2-year program. Okay, and we have the courses for the IFT MyCAT test as well. We provide the GK courses, GK PDF, GK course, test course. अगर आपको किसी में भी enroll करना है, you can ping me on this number 7982139467. Okay, ये 9 है और ये भी 9 है यार, ठीक है. You can WhatsApp me on this number. You can see our past results if you want to watch them. Okay, you can read the reviews as well, and if you want to read, you can just pause the video. We provide the books as well, the DILR book, the verbal ability book, and the quantity ability book, which are specially designed for the NMAT and Snap. And you can follow us on Facebook, YouTube, and Telegram. All the links are in description below. अगर आपको कोर्स खरीदने हैं तब भी उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रिव्यूज बुक्स का भी नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है. सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन. बट दिन भर डाली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेक श्योर हिट द लाइक बटन यार, ठीक है. थोड़ा मोटिवेशन दो, मैं जल्दी जल्दी और डालूंगा, ठीक है. सो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सजेशन और क्वेरी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब यार, यूट्यूब पे जरूर कर देना सब्सक्राइब, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय.